Hello everyone, welcome to Career Launcher, and today we are going to talk about MICAT 2026. And here, this time we are going to do some couple of sets of data interpretation so that you will have some idea about what is going to happen in MICAT 2026. We are going to have few sets of MICAT, and generally MICAT do not release their papers. So basically, there are not a lot of MICAT sets out there around there. So let's see the similar type of sets that we have seen over the previous years. So now let's start. So let's start with the first set. What does first set says? The bar graph uh, given below shows the number of candidates in thousands qualified in the written test for admission into different colleges ABC and XYZ. Okay. So basically, there are two bars. One is going to be white bar, second one is going to be black bar. So white bar stands for college ABC, black bar stands for college XYZ. Okay. And data is given. And the important part is that data is given a number of candidates in thousands. So basically, this is not 2. This is actually 2000. This is not 3.5. This is 3500. This is not 3.5. This is 3500. This is not 4. This is 4000. So basically, this is what that is given to us. Okay. Now, what is the next step we are going to take? Can someone tell me what should we do next? Should I calculate everything? Should I calculate sum? Should I calculate average? What should we do? So, so whenever we get these kind of things, what do? We just read the data. So just I've seen. So data, the graph is talking about years 11, 12, 13, 14, 15, and 16. It is also talking about the number of candidates who have qualified in the written test for college ABC and XYZ in the respective years. Now, there is nothing else to do. So directly I'm going to jump to the questions. The first question: what was the respective ratio between the number of candidates qualified in the written test in year 2011 in XYZ and number of candidates qualified in the written test in 2015 in ABC? 2011 XYZ, 2015 ABC. 2011 XYZ, so XYZ is the black one. So basically 2011 XYZ, that is 3500. And it is talking about the ratio, so is 2. And 2015 ABC, and that is going to be what? 4000. So it is 3500 is to 4000. I can directly cancel out by 500, so it is going to be 7 is to 8. So answer of this question is going to be 7 is to 8. So first one, is it fairly easy? Yes. Is it extremely easy? Yes. So basically, we are good to go. Now, let's look at the next one. What is the approximate average number of candidates qualifying in the written test for the admission test during this XYZ during the period? Okay. So XYZ and average number of people. Okay. So what we are going to do, XYZ and average means I need to find out the sum. So this is going to be 6 plus 5, 11. 11 plus this comes out to be 8, 19. 19 plus 5.5 is 24.5 plus 3.5 is 28. So total sum comes out to be 28,000 because values are given in 1000 divided by 6. So this is going to be close to 4600, 4700 close to. So answer of this question is directly going to be option D. Fairly easy set. This question and this set seems very easy. Now, the problem we can face in MICAT that I have picked up the questions where all the questions have 4 options. But in reality, MICAT can have, in the same question, it can have 3 options, it can have 4 options, it can have 5 options, it can have 8 options. So MICAT doesn't have a defined number of options. You can have any number of options. So that is the problem we face in MICAT. Now, in which year the total number of candidates qualified in the written test, both the colleges together, is highest? Okay, sorry, second highest. Okay,
So now this might be a little tricky one because people might miss out, as I missed out the highest one. So generally what people are going to do, they are going to mark 2016 because I can see it is the highest, both in ABC as well as XYZ. So it is the highest, but question is not talking about highest. Question is talking about second highest. So second highest कहाँ पे है, क्या हमें calculate करने की जरूरत नहीं है. That is directly visible to us. This is definitely second highest. So 2014, there is no calculation. Just look at the data, mark the answer, and move on. So answer of this question is going to be option C. So are we clear on this, everyone? सब लोग क्लियर हैं? हमने अभी तक जो भी किया, 3 questions we have solved. Now let's look for the next one. What is the difference between total number of candidates qualified in the written test in 2015? In 2015, ABC and XYZ together, and 2012, ABC. Okay. So 2015, ABC and XYZ together. So that is 5 plus 4, 9,000. And 2012, that is ABC only, means 3,500. So what is the difference we are looking for? We are looking for a difference of 5,500. The answer of this question is going to be 5,500. That is again an easy question, and this is a very extremely easy set that we have solved. Now let's check the answer. So C, D, C, D, C, D, C, D. We got the answers right. Clear, everyone? Now let's move on to next set. Is it similarly easy? So basically, I can see 2 pie charts. एक pie chart है जहाँ पे values percentage में given है. There are another pie chart जिसमें values degrees में given है. ठीक है. 7 wonders के बारे में बात हो रही है, and total the pie chart is talking about total number of visitors. So basically, in which wonder how many people have visited. So in 2014, data is talking about 2014 and 2015. In 2014, total number of visitors were 525. In 2015, total number of visitors were 450. ठीक है. 2014 में वैल्यू जो है वो परसेंटेज है, 2015 में वैल्यू जो है वो डिग्री है. ठीक. अब हमें डिग्री और परसेंटेज समझना है कि डिग्री को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट 360 degrees is the total circle, so that must be equivalent to total data, that is 100%. so इसका सिंपल मतलब यह है कि 36 degrees जो होगी वो 10% के इक्विवेलेंट होगी. ठीक. तो ये तो अपना सीधे आ गया 10%. चिचन इट्जा इज 10% ऑफ 450. ठीक. 18 डिग्री जो होगा वो किसके इक्विवेलेंट होगा? वो होगा 5% के इक्विवेलेंट, हाफ ऑफ इट. सो 36 प्लस 18, दैट इज गोइंग टू बी 54. 54 जो होगा वो 15 डिग्री के इक्विवेलेंट होगा. ठीक है. 72 is actually twice of 36, so this should be equivalent to 20%. ठीक है. Now I can say Petra is 18, that is 5%. और ये माचू पिच्चू जो होगा वो अपना कितना होगा? दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच? 10%. एंड ताजमहल इज 45. सो आई कैन से 9 degrees is going to be what? That is going to be 2.5%. So 2.5%. So 9 5s are 45. So इसका मतलब 2.5 into 5. So 2.5 into 5 is going to be how much? That is going to be 12.5. So Taj Mahal is 12.5%. Now we have Great Wall of China, that is 99%. So 99% का ब्रेकअप क्या होगा? 9 into 11. सीधे सीधे लिख सकते हैं. तो 9 into 11 क्या होगा? That is going to be 2.5 into 11. So that is going to be 27.5%. 27.5%, yes. So that's what we are getting so far. ये वैल्यूज अपने पास परसेंटेज में. अब अपन क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है. Now I am just directly going to look at question number 3.
How many wonders recorded at least 10% of increase in number of tourists in 2015 as compared to 2014? अब 2014 में बेस ज्यादा है, दैट इज 525. 2015 में बेस कम है, दैट इज 450. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि कम से कम 10% का इंक्रीज हुआ. ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो पहले तो मैं परसेंटेज देख लेता हूँ. परसेंटेज ताजमहल में 20 था, यहाँ पे 12.5 है, तो इंक्रीज तो पक्का नहीं हुआ है, डिक्रीज हुआ है, बिकॉज इट इज 20% ऑफ 525, इट इज 12.5% ऑफ 450, तो डिक्रीज हुआ है, तो ताजमहल तो गया. ठीक है, अपन आते हैं दूसरा. माचू पिच्चू में कितना था, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 10 है, शायद इंक्रीज हुआ होगा. ठीक है, पेट्रा में कितना था, यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 5, मतलब इसमें भी नहीं हो सकता, इसमें तो डिक्रीमेंट हुआ ही हुआ. चिचन इट्जा में 6 था, यहाँ पे अपना कितना है, 10, हो सकता है इंक्रीमेंट. क्राइस्ट द रिडीमर में यहाँ पे 18% था, यहाँ पे 15% है, मतलब यहाँ पे इंक्रीज नहीं हुआ. कोलोसियम में यहाँ 14 है, यहाँ पे इतना है, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 27.5 है. अब हमें देखना है कि कम से कम 10% का इंक्रीज. ठीक है, सो बेसिकली सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं 525 का 1% क्या होगा, दैट इज 5.25. सो 5%, इसका 525 का जो 2% होगा, दैट इज गोइंग टू बी 10.5. ठीक है, सो इसका 6% क्या होगा, इसका जो 6% होगा, इसका मतलब दैट इज 2%, सो 2% इतना है, तो 6% होगा इंटू 3, दैट इज गोइंग टू बी 31.5. यहाँ पे है 31.5. चिचन इट्जा में 8 का मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 42. ठीक है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में 22 है, सो बेसिकली अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्लोजियम का आ जाएगा. सो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना कितना आएगा, 73.5 मिलियंस. और अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आएगा 115.5. ठीक है, अब तो यहाँ पे ताजमहल हमें चेक नहीं करना, पेट्रा हमें चेक नहीं करना, माचू पिच्चू हमें करना है, दैट इज 10% ऑफ 450, दैट इज 45. ठीक है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दैट इज इसको निकालने में थोड़ी सी मेहनत होगी, खैर देखते हैं इसको भी. चिचन इट्जा इज 10%, दैट इज अगेन 45. ठीक है, Christ the Redeemer is 15%, so 10% is 45, so 5% 22.5, so it is going to be 67.5. ठीक है, सो क्राइस्ट द रिडीमर तो वैसे भी नहीं था, लेकिन हमने निकाल दिया, कोई बात नहीं. 20% इज गोइंग टू बी 90. ठीक है, और 27.5 का मतलब मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, 27.5, हाउ कैन आई कैलकुलेट 27.5, दैट इज गोइंग टू बी 25% plus 2.5%. So 25% is going to be what? 25% मतलब 1/4 इसका, so 1/4 is going to be 112.5 plus 11.25, so that is going to be 0.75, 123. ठीक है, 123.75. This is 31.5. 10% ऑफ दिस इज गोइंग टू बी 3, सो अगर 10% इंक्रीज होगा तो 34 के आसपास कुछ होगा, तो चिचन इट्जा में 10% से तो ज्यादा का इंक्रीज है. प्राइस द रिडीमर तो चेक ही नहीं करना हमें, कोलोसियम में 73 है, इसका 10% 7 कुछ होगा, यहाँ पे 90 हो गया, तो 10% से ज्यादा का इंक्रीज है, दैट इज. इसका 10% कुछ 11 होगा, यहाँ पे 126 से ज्यादा होना चाहिए, जो नहीं है. ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी नहीं होगा. और माचू पिच्चू इज 42, 10% इज गोइंग टू बी 4 पॉइंट समथिंग, सो इट शुड बी 46 पॉइंट समथिंग, जो नहीं है, मतलब ये भी नहीं है. तो अपने पास टोटल कितने आए, एक तो आया कोलोजियम, एक आया चिचन इट्जा. सो बेसिकली आंसर इसका जो होगा वो होगा 2, वो हमें निकालना था, वो हमने निकाल लिया. ठीक, अब नाउ दिस इज अ लेंथी सेट एंड वेरी लेंथी सेट. Total number of tourists who visited Christ the Redeemer, Machu Picchu and Petra together in 2014 is what percent more than the number of Colosseum and Petra together? So Christ the Redeemer, Machu Picchu and Petra. So Christ the Redeemer, Machu Picchu is and Petra. Okay. So basically 2% is 10.5. So 12% का मतलब 63. And it is going to be multiplied by 9, so that is going to be 94.5. So Christ the Redeemer,
this comes out to be 105 plus 94.5. So this comes out to be 199.5, that is close to 200. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माचू पिच्चू इज 40, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, कोलोसियम एंड पीट्रा. So Colosseum is 90 and Petra we need to calculate. So basically 20% is going to be 90. Sorry, this is 5% now. So it is going to be 22.5. So this comes out to be 112.5. अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितना परसेंट ऊपर है, कितना परसेंट नीचे है. So basically अच्छा, व्हाट परसेंट मोर. सो बेसिकली इसको अगर हम देखें, सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी हाउ मच, द इंक्रीज इज गोइंग टू बी 87 87 ओवर 112.5. सो ये जो वैल्यू होगी ये अपनी 80% के आसपास तो कुछ होनी ही चाहिए ना. बेसिकली it should be close to 80% around. So 80% of this 88ish कुछ आएगा इसका. 110 का 80% is going to be 88. So this value is going to be little lesser than 80%. So answer of this question is going to be option D, that is 77. ठीक है. सो बेसिकली कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है इस सेट में, लेकिन माइकैट में आपको इस टाइप के सेट रेगुलरली विजिबल होंगे, तो ना उसमें कोई इशू नहीं है. कुछ अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वंडर्स रिकॉर्डेड द हाईएस्ट इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ टूरिस्ट इन 2015. ठीक है. सो हाईएस्ट नंबर पूछा है, कितने का इंक्रीज है इसमें, वो हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं. वैल्यूज हम सारी निकाल ही चुके हैं. सो अगर मैं यहाँ पे देखूं, ताजमहल में तो डिक्रीमेंट हो रहा है, क्राइस्ट द रिडीमर में दैट इज 94.5 से 67.5 डिक्रीज हो रहा है. ठीक है. पीट्रा में डिक्रीज हो रहा है, अच्छा खासा डिक्रीज हो रहा है. माचू पिच्चू में बहुत छोटा सा मिनिमल सा इंक्रीज हो रहा है. सो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में इंक्रीज है कुछ 8 के आसपास. चिचिन इट्जा में जो इंक्रीज है दैट इज क्लोज टू 13.5. एंड अगर मैं कोलोसियम में इंक्रीज देखूं दैट इज 16.5. सो हाईएस्ट इंक्रीज आई कैन सी इन कोलोसियम, दैट्स गोइंग टू बी ऑप्शन सी. There is too much information, too many values actually. If the expected number of tourists in 2016 is 425, that is lesser, and breakup is similar to 2014, then what would be the percentage change in the अच्छा ठीक है. So basically 2016 में number of people are 425 and breakup is same as 2014. सो 2014 में माचू पिच्चू में कितने लोग थे, दैट इज 8%. ठीक है. और यहाँ पे थे अपने टोटल 45. ठीक है. सो 8% थे. सो बेसिकली इट इज गोइंग टू बी 8% in 2016 एंड इन 2014 जो नंबर 2015 जो माचू पिच्चू का नंबर था दैट वाज 45. सो 8% का मतलब मैं सबसे पहले वही करूंगा कि व्हाट इज 10% ऑफ इट, दैट इज 42.5. व्हाट इज 1% ऑफ इट, दैट इज गोइंग टू बी 4.25. सो 2% इज गोइंग टू बी व्हाट, 8.5. सो 8.5 माइनस कर देते हैं, तो 8% इसका जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी 34. ओके. नाउ व्हाट इज द डिक्रीमेंट वी आर सीइंग, वी आर सीइंग अ डिक्रीमेंट ऑफ 11 ओवर व्हाट, over 45 into 100. So basically जो वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी वेरी क्लोज टू 25%. 25% से एकदम हल्का सा कम. सो दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन 4, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज 24.44. So answer of this question is going to be option E. So have you got the answers right? Yes. So in MICAT, you can expect similar type of sets that are lengthy, boring. They are going to take a lot of time. जिसमें पूरे टाइम यही लगता रहता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ देते हैं. लेकिन if you see the questions very clearly, you are going to find कि क्वेश्चन आसान है. If you just go back solve it on your own, you are going to see क्वेश्चन आसान है. कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, आसान क्वेश्चन है. But is it easy to solve? Yes. Is it lengthy to solve? Yes. Is it boring? Yes.
बहुत boring, perhaps yes, because there are too many numbers, too many percentage, and percentage कई बार अजीब से नंबर का निकालना बहुत आसान नहीं होता है, अप्रोक्सीमेशन करना भी बहुत आसान नहीं होता है. So you just need to practice a little bit so that you will be comfortable with these kind of things. Now, I hope a lot of you have written CAT. CAT result is out. So if you got some calls, then it's high time to join PDP. If you want to take a drop, it's fine. If you don't want to take a drop, then uh, uh, work your hardest so that you can get into college this year itself. Now, if you have a doubt, you can ask me your doubts. If anyone has a doubt, you can ask me. Sometimes you need a right place to discover your true potential. For me, that was Amrita, surrounded by nature, learning, and purpose. Hi, I'm Shruti Nair, currently pursuing my MBA in Marketing and Business Analytics at Amrita School of Business, Coimbatore. And I'm happy to share that I have secured a PPO as a business consultant at Driver Consulting. My journey began as a techie who always loved coding. But I always wanted to know the business and strategy behind each line of code. That's when I decided to pursue my MBA, and ASB helped me make that shift smoothly. My internship at DryWork was through an alumnus who believed in me, and during my stint there, I was able to apply the textbook knowledge that I gained from Amrita solving real business problems. And that experience led me to our PPO. From mentors to alumni to PlaceCom members, everyone at ASB shaped me and supported me throughout this journey. ASB didn't just give me opportunities, it helped me become whom I am meant to be.